Okay, guys, I need your attention now. We will start our today's lecture. Mm, in the last lecture, some of the guys, in fact, most of the guys were missing, so I'll be repeating the same lecture, but make sure that not to do this kind of thing again. Okay, please be on time in the class. As you know that the classes are going to be online, so then you will be having troubles while understanding the lecture. Therefore, always come to the class in time. Okay. Now, before getting into detail, uh, I am going to share my computer screen with you. Have a look and confirm it to me that you all can see it. Okay, can you see it? Yes, sir. Okay. Now, the course that we are going to study, this is called Industrial Drives and PLC. Is this visible? Is this visible to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. So the course is basically in two parts. The first part is industrial drives, and I will denote it with ID. The second part is PLC, and PLC stands for Programmable Logic Control. In some of the books, it might be Programmable Logic Controller. In some books, you will find Programmable Logic Control. But in this course, I find it more appropriate that we call it programmable logic control, right? But if you have trouble with this and if you want to write programmable logic controller, I don't mind. But the preferred way will be programmable logic control. So try to follow the word programmable logic control. Okay? Okay? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just let me check if we have some more guys. Uh, okay, now for those uh, who have some genuine reasons and they miss the class, maybe because they don't have the internet facility, or maybe because there is some problem with the electricity, or due to some any genuine cause. So, so be prepared that this lecture is going to be recorded. So be careful what you are talking. Okay. I will upload these lectures on YouTube as well for you. So again, for those people who have or those students who missed the class, they can come later on and review it. Okay. So you don't have to Yes, panic sir. if you miss the class, but make sure that if it is possible for you to come to the class, then do come to the class because that will give you more advantage. So something that you don't understand, you can live ask me. Okay. Okay. Now let's get into detail first with the industrial drive. So can anybody tell me the difference between what is the difference between an electrical machine and an industrial drive from your basic knowledge? What do you think? What is the difference between an electrical machine and an industrial drive? Sir, to combine the industrial drive. Yeah, yes, very good. Now, a machine is a very primitive technology, like it is very rudimentary. That is to say, if you connect an electric machine to any item, so all the things that are going to be driven by the machine or even the machine itself, all the controls will remain manual. Like you have manually to operate the machine, control its speed. Maybe just for an example, let's say
you are using a donkey pump or a water pump or an induction motor to fill up your tank that is in your home, right? So what happens is that the machine is quite dumb, right? So it doesn't understand that whether the tank is at full or is it at half or at what speed it is sucking out and pushing out the water. So the machine remains quite dumb. So for all these controlling items, you have to do it manually. Is this correct? Now, let us take an example that if you want to operate a machine in an industry, so there are hundreds of machines in there, and if the situation goes the same way as you are taking the a machine that you drive in home for filling up your tank, so imagine how many number of technicians or maybe operators you might require to operate those hundreds of machines, right? So that means the amount of salaries you are going to pay and the amount of employees you are going to hire will be tremendous. So to bring some automation into these machines that they become self-sufficient and they get a bit of intelligence where they can control those parameters which you require, so that type of system will be called industrial drive. Okay, so let me draw a block diagram for you people to make you understand that how an industrial drive should look like. Are you people understanding what I'm saying? Yes, sir. आई Yes, sir. एम गोइंग क्वाइट स्लो. ठीक है, मैं स्पीड नहीं पकड़ रहा ताकि आप मुझे फॉलो करते जाएं. ओके, सो जी सर. the first block that we are going to have, this is a very generalized block that I am going to draw. Okay, so the first thing that I am going to draw is the input power. From the input power, I am basically referring to an AC or DC power supply. Is this visible? Yes, sir. Okay. Now, since you all know that an electric machine is an electric gadget, so that will definitely require some electrical power. Okay, so that electric power, depending upon your situation, it might be AC supply or DC supply, but usually we prefer to use AC supply for machines because when you are working in the industry, most of the time you are dealing with high torque or high speed motors. Okay, so giving DC supply to all those machines become very difficult because you have to use a lot of rectifiers for that. But AC is readily available all the time, so that is why the preferred mode is AC supply. But at times, or in special conditions, you might also be using DC supply. Okay, but even if you are using AC supply, still you need DC supply because the programmable logic control part, which is your computerized part or the logic controller, that is always driven with DC supply. So whether your machine is working with AC or DC, but still you need a DC supply to operate that logic controller. Okay. Now you might have a question that why do we need DC supply specifically for the logic controller? The answer to that is that since logic controllers work on gates and all these stuff like and or not gate, so this is a small sort of a computer, and you know that even if we plug our computer into AC supply, there is a rectifier inside the computer which convert the AC supply into DC. So your computer always works on DC supply no matter what. Is this understandable? Does it make sense? Hello? Okay. Okay. So after the input power, then we get uh, this is an arrow, and then we get our electric drive. Now again, coming back to the original idea or the basic idea, the electric drive can be
AC or DC. This is the same electric drive that we usually use. Okay, so there is no much rocket science involved in the logic of an electric drive. This is just the drive that you need to operate your gear system or your weight or or something that will produce the torque, or something that is just like an engine which will give life to all of the system. Okay. Yes, sir. Okay. Then comes our gear assembly. You might use drive belts, or you might use whatever you want to use with which you have coupled your machine. But for to make it simple, I will use gear assembly. Okay. Gear assembly is something where you will provide the motor force to drive it on. Okay. So this is our Yes, gear sir. assembly. Then after the gear assembly, what comes here? There is a specific. Now here comes the real part. Here comes a transducer. What does a transducer do? Now, the basic idea of a transducer is that it will convert something physical quantity into some electric voltage or some current. Now, what does it mean? Let us say you want to control the speed of this motor. Okay, so this transducer will be monitored. Which This might be a tachometer which converts the speed of this motor, or which calculates the speed of this motor, and then at the output it gives some electric waveform, or maybe some current waveform. Okay, जिस तरह आप घर में या लैब में ट्रांसड्यूसर देखते हैं तो वो क्या करता है कि एक व्हील के साथ उसके साथ लगी होती है, जैसे ही आप वो ड्राइव के साथ कनेक्ट करते हैं वो रोटेट करता है और आउटपुट या डिस्प्ले के ऊपर आपको आरपीएम देता है, ऐसे ही होता है। Yes, sir. ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर जो है हम एक जेनेरिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि आपकी वो पर्टिकुलर क्वांटिटी को मैयर कर रही होती है। जैसे कि अगर लेट अस से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वे स्केल है या कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट उस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर आप अपने पैकेट्स या कोई भी जो क्वांटिटीज आपने बनाई है वो आप पैकिंग के लिए आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कन्वेयर बेल्ट लेट अस से अगर मैंने लिखा हो, उसकी मैंने प्रोग्राम किया हो कि 20 kg से कम की जो बोरी होगी उसको आप कन्वेयर बेल्ट से नीचे गिराएं। ठीक है, तो वो कन्वेयर बेल्ट के साथ कोई सेंसर लगा होगा जो कि उसका वेट मॉनिटर कर रहा होगा, ऐसे ही है। Sir. ठीक है, तो वो जो सेंसर होगा जो कि उसका वेट मेजर करेगा, दैट वेरी सेंसर इज कॉल्ड द ट्रांसड्यूसर इन अ जनरल फॉर्म। ठीक है, so Yes, so sir. here the concept lies is that let us say we want to monitor the speed of the motor and we want to maintain 200 rpm, okay, of a gear assembly. So with that we attach a transducer which continuously monitors which continuously monitors the speed of that gear system. Okay, now when you add some weight on that gear assembly, so automatically the speed of the motor will drop because आपने उसके ऊपर कोई additional weight डाल दिया है, ऐसा ही होगा। ठीक है, so when this transducer detects this thing that the speed has been dropped, so it will give a signal to a feedback system. Here we call this feedback system. Okay, so this transducer, once detecting that the speed of the motor has reduced, so what will happen? It will give a signal to that feedback system, and that very feedback system will tell the motor to increase the speed so that we can maintain that very 200 rpm for our system. So basically, all the blocks combined, they make an electric drive. ठीक है,
इसमें जो ये वाली चीज आपको नजर आ रही है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक मशीन, एंड दिस इलेक्ट्रिक machine combined with all these blocks, this makes it an industrial drive. So this is the basic difference between an electric machine and an industrial drive. Is this clear now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Anybody who can repeat what I have said? Yes, sir. आप में से कोई बंदा जो मैंने कहा है उसको जरा रिपीट कर दें कि आपको क्या समझ आई है। सर, ये हमारे पास लाइक डायग्राम है सर। हमारे पास इनपुट पावर है, जी। जो एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है है। सर। फिर हमने एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव लगाया है सर, जी। वो एसी चलता है और डीसी पर सर, तो हमें दोनों चाहिए, एसी हो तो एसी चाहिए, जी। डीसी हो तो डीसी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हमें दोनों की जरूरत होती है सर। डीसी की जरूरत होती है क्योंकि हमारे पास जो होता है, जो प्रोग्रामेबल सिस्टम होता है, वो कंप्यूटर के जरिए होता है, जी। तो इसको ड्राइव करने के लिए डीसी चाहिए सर। जी। इसलिए हम हमारे साथ डीसी वर्ड होती है। बिल्कुल। इसके बाद सर इलेक्ट्रिकल ड्राइव को किसी असेंबली से हम इसको डाल देते हैं। इसलिए हम इसको हमें एक चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो ड्राइव हो सके। और बिल्कुल। इसके लिए सर, अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी स्पीड को मेजर करना चाहते हैं, जी। तो हम इसके लिए अगर हम इसको करना चाहते हैं, तो हम एक ट्रांसड्यूसर लगाते हैं जी। ताकि हमें इसकी स्पीड का पता चले या कम बिल्कुल। वगैरह हो तो इसको निकाल दे सर। आपने एग्जाम्पल दी कि जी। अगर हमारे पास सर सारे पैकेट्स 20 केजी, जी। अगर इसमें से कोई हो तो वो ये ट्रांसड्यूसर सेंस करके इसको निकाल देता है। ठीक तो है। इसके साथ हम ट्रांसड्यूसर लगाते हैं सेंसिंग के साथ, और ठीक फिर है। इसका फीड सिस्टम लगा लेते हैं। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। सो हु इज दिस गाय जिसने ये एक्सप्लेन किया है? व्हाट इज योर नेम? सादुल्ला। Okay, Sadullah. Okay, so what, how now the question arises कि ये मोटर जो है, मतलब how does it increase the speed when the feedback system tells it कि आप अपनी स्पीड को कम कर दें या ज्यादा कर दें। तो आपको पता है कि मोटर को कंट्रोल करने के हमारे पास वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास जो है, अगर हम रेजिस्टेंस से हमारे पास सीरीज में आर्मेचर में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या वट एवर जिस तरीके से भी आप मशीन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो ये फीडबैक सिस्टम उसी कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ लगा होता है, और वो मोटर के जो पैरामीटर्स होते हैं जिससे स्पीड कम और ज्यादा होती है उसको ये छेड़ रहा होता है, और इस तरह ये मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा करता है। सिंपल सिंपल एग्जांपल, लेट अस से आप किसी कमरे में बैठे हैं, ठीक है, और आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, आप पंखा लगाते हैं लेकिन फिर भी आपको गर्मी ज्यादा लगती है, जो कि आपकी बॉडी सेंस कर रही है, तो आपकी बॉडी आपको बताती है कि मुझे गर्मी लग रही है, पंखा तेज करें, तो आप उठते हैं और आपके घर में जो पंखे के साथ जो रियोस्टेट या रेगुलेटर लगा होता है आप उसको तेज कर देते हैं, ठीक है, तो आपका पंखा तेज हो जाता है। So the very same principle applies to this industrial drive. Okay. Okay. Anyone जिसको समझ नहीं आई या जिसको कोई प्रॉब्लम है, he can ask now so that I can move ahead. सर, सर इसको बना दिए सर, तो ये फीडबैक सिस्टम हमने पहले से सब इलेक्ट्रिकल ड्राइव इसका आउटपुट इनपुट होता है सर। बेसिकली फीडबैक सिस्टम में डायरेक्ट जो आपके पास जो मोटर का आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है, जी सर। वो ट्रांसड्यूसर में सबसे पहले ट्रांसड्यूसर उसको सेंस करता है, फीडबैक सिस्टम को पता नहीं होता, उसके साथ कोई मशीन कोई सेंसिटिव या कोई गैजेट लगा होता है कि जो कि उस पैरामीटर को डिटेक्ट करता है, वो ट्रांसड्यूसर फीडबैक सिस्टम को बताता है कि आप लेट से 2 आरपीएम या 4 आरपीएम नीचे हैं ओरिजिनल आरपीएम से जो हमें चाहिए, ठीक है, तो फीडबैक सिस्टम अकॉर्डिंगली वो मशीन के वो पैरामीटर को छेड़ देता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। Okay, so is this clear now? Okay, now let us go towards the PLC now कि PLC क्या चीज़ है।
ओके, आप सबको नजर आ रहे हैं? So I am writing here again PLC. PLC, which stands for Programmable Logic Control, or maybe some might call it controller. बट ये जो कंट्रोल का वर्ड है, आप कोशिश करें कि आप इसी को इस्तेमाल करें, ठीक है? और ये कंट्रोलर का जो वर्ड है, इसको कोशिश करें कि इसको आप अवॉइड करें। सबको नजर आ रहा है? ये मैं इसको बड़ा यस सर, यस सर। ओके, सो व्हाट डिड आई से कि कंट्रोल का वर्ड प्रेफरेबल है, इसको आप यूज करें, और कंट्रोलर का वर्ड अवॉइड करें, ठीक है? कोर्स में हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोलर का नहीं करेंगे। ओके, नाउ ओके सर। पीएलसी बेसिकली होती क्या है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज जो पीएलसी के साथ आएगी, सबसे पहली चीज जो कि इसकी रूह है, ठीक है? जिस तरह एक बदन में या बॉडी को एक रूह चाहिए होती है उसको ड्राइव करने के लिए, तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड हियर इज योर डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई 12 वोल्ट भी हो सकती है, 24 वोल्ट भी हो सकती है, और 36 वोल्ट भी हो सकती है, बट यूजुअली हम हमारे पास जो सबसे प्रेफर्ड होती है, दैट इज द 24 वोल्ट सिस्टम। ओके, ओके। ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर आपने, हमारे पास 12 वोल्ट तो स्टैंडर्ड है, तो हम 24 वोल्ट पे क्यों जाते हैं, और हम 36 वोल्ट पे क्यों जाते हैं, हम ये वोल्टेज क्यों ज्यादा करते हैं, इसकी वजह क्या होती है? You guys might have this question. Anybody who knows the answer? नो सर, ओके। ना हमारे पास एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं P इज इक्वल टू वी आई, ऐसा ही है। ओके, अब देखें, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो है, ये बहुत सारे मशीनों को और बहुत सारे फीडबैक सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है? ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक मशीन के साथ एक ही पीएलसी लगी होती है, ये बहुत सारे 30 40 50 60 मशीनों को मिला के उसके साथ एक पीएलसी लगी होती है। इसकी वजह ये होती है कि पीएलसी इटसेल्फ लाखों रुपए में होती है, ठीक है? तो उस कॉस्ट को बचाने के लिए हमारे पास जो पीएलसी का जो सिस्टम डिजाइन होता है, तो एक पीएलसी हमने कोई 50 60 मोटरों के साथ लग, या 50 60 आगे रिलेज हों या जो भी हों, उन सारी चीज़ों के साथ हमने लगाई होती है, लेकिन कोई 50 60 आउटपुट से साइमल्टेनियसली दे रहा होता है, ठीक है? ओके, ना अब देखें, अगर ये लेट्स से अगर हम अज्यूम करते हैं कि मुझे इससे 12 चीज़ें कंट्रोल करनी है, ठीक है? 12 चीज़ें मुझे कंट्रोल करनी है। ओके, सो यहाँ पे देखें, लेट अस अज्यूम कि मेरा पीएलसी का जो पावर है वो 24 वॉट है, मैं पी में 24 डालता हूँ, करेक्ट? करेक्ट, आपको आवाज आ रही? ठीक है, वोल्टेज मेरे पास क्या है, सबसे पहले 12 वोल्ट है, ठीक है? तो जब मेरे पास 12 वोल्ट होंगे तो 24 के लिए मुझे कितने करंट चाहिए होगा? एनीवन? 2 एम्पेयर्स। ओके, अब दोबारा देखें, लेट अस से मैं इसी पीएलसी को 24 वोल्ट से ड्राइव करता हूँ, तो 24 मेरी वापस पावर आ गई जो मुझे चाहिए। अब मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ 24 वोल्ट से, अब मुझे कितने एम्पेयर चाहिए होंगे? 1 एम्पेयर। तो मेरे पास कितना परसेंट फर्क आ गया है?
करंट कंजम्पशन में 50% मेरे पास करंट रिड्यूस हो गई है, क्योंकि पहले मैं 2 वोल्ट इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं 1 वोल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डीसी सप्लाई इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस। क्यों? क्योंकि वहां पे हम रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप खुद सोचें कि अगर मेरे पास ज्यादा वोल्टेज पे वो पीएलसी ड्राइव कर रही है तो मुझे कम एम्पेयर वाला रेक्टिफायर पे भी मैं वो चला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं लो वोल्टेज पे पीएलसी को चलाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा हाई कैपेसिटी रेक्टिफायर चाहिए होगा उसको चलाने के लिए, ताकि उसके वॉट्स मेंटेन रहें, पावर मेंटेन रहे। तो अब अगर लेट से मैं ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाला रेक्टिफायर इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे मसला क्या होगा कि वो मेरे पास ज़्यादा करंट जब इस्तेमाल करेगा तो मुझे हाई कैपेसिटी वाला रेक्टिफायर जो है वो मुझे एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने हाई वोल्टेज मेरे पास अवेलेबल हो मैं अपनी पीएलसी को उस पे चलाऊं। इज दिस क्लियर? तो टेक्निकली जो हमारे पास इजीली कमर्शियली अवेलेबल रेक्टिफायर्स हैं वो 12 वोल्ट में हैं और 24 वोल्ट में हैं। 36 वोल्ट में बहुत कम आते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 24 वोल्ट का पीएलसी इस्तेमाल करें। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि सर व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट हैव अ 24 वोल्ट रेक्टिफायर और मेरे पास सारे रेक्टिफायर जो हैं वो 12 वोल्ट के अवेलेबल है। तो व्हाट आई हैव टू डू ताकि मैं उसको 24 वोल्ट बना लूं? एनीवन? सीरीज में ओके, सो वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि आपके पास कंपनी में या जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं आपके पास सिर्फ 12 वोल्ट के रेक्टिफायर अवेलेबल है, 24 वोल्ट का नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप दो रेक्टिफायर को सीरीज में कनेक्ट कर लें तो आपके पास आउटपुट 24 वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है? सर वोल्टेज डिवाइड होता है सर। सीरीज में बच्चे वोल्टेज ज्यादा होता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। यस सर। ये आपके पास एक सेल है और ये आपके पास दूसरा सेल है। इन दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो मेरे दोनों 1.5 के, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? 3 वोल्ट्स। वाई? बिकॉज दिस इज इन सीरीज। इन सीरीज आपका वोल्टेज ऐड होता जाएगा। एंड इफ आई कनेक्ट बोथ ऑफ देम इन पैरेलल तो फिर मेरे पास क्या होगा वोल्टेज? जी 1.5, बिकॉज पैरेलल में आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और सीरीज में आपका वोल्टेज ऐड हो रहा होता है। इसीलिए आपके घर में जितनी सारी डिवाइसेस लगी होती है वो पैरेलली कनेक्टेड होती हैं, सीरीज में कनेक्ट नहीं होती। ओके? ओके, नाउ वेयर वाज आई? ओके, आई वाज एट द 24 वोल्ट। आई थिंक कि यहाँ तक हमारा लेक्चर काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर। तो इसको आप देख लें। कमिंग लेक्चर में आप लोगों का ऑनलाइन क्विज होगा, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ाया इसी में ऑनलाइन क्विज होगा। ओके? मैं इस जो मेरा जो ये लेक्चर है इसको मैं अभी ऑनलाइन भी आपको लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आपको चैनल का पता है? जी बिल्कुल, साद मजीद। आप मैं भी उसमें लगा देता हूँ, क्या कहते हैं, मैं भी उसको जो है यूट्यूब पे थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है, तो जैसी लाइट आ जाती है मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ और मैं ग्रुप में बता देता हूँ चैनल का, ठीक है। सो जिससे लेक्चर मिस हो गया वो वहाँ पे जाके देख ले। ओके? वन थिंग मेक श्योर, यूट्यूब पे मेरे पास हर लड़के का स्टेटिस्टिक्स आ रहा होता है कि ये लेक्चर कितना देख रहा है, 1 मिनट का देख रहा है, 2 मिनट का देख रहा है, या सिर्फ प्ले कर रहा होता है। सो मेक श्योर कि यूट्यूब पे जो जो है लेक्चर डालता हूँ जाता हूँ मैं, उस सारे को आप जीरो से लेके एंड तक देखें। ओके? आप सबकी स्टेटिस्टिक्स मेरे पास वहां पे आ रही होती है। मैं तब अटेंडेंस लगाऊंगा कि जब हर एक बंदे ने जीरो से लेके आखिर तक वो वीडियो देख लिए। किसी ने नहीं देखी तो मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा।
You got my point? Okay. Yes. जी सर। सर लेकिन हम तो डाउनलोड क्या करते हो? सर डाउनलोड करते हैं फिर बाद में देखते डाउनलोड करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, क्योंकि उसके बगैर मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। आप डाउनलोड करते हैं, फिर जब पेपर आता है तो फिर आप कहते हैं कि ये तो हमने देखा ही नहीं है, ये तो हमसे भूल गया है। तो इसलिए इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायर्ड कि आप उस पूरी वीडियो को देख लें। अगर डाउनलोड भी कर रहे हैं, आपने यूट्यूब की वीडियो पूरी देखनी है, अदरवाइज मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। ठीक है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, हैव अ गुड डे। जी 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 जी, any question? No, sir. Okay, the class is dismissed. Have a good day. Goodbye.